everyone. So as we know that South Asian University का जो MA Economics entrance का एग्जाम है, that is in अप्रैल के सेकंड लास्ट वीक में वो एग्जाम है MA Economics entrance का. एंड देयर प्राइमरी फोकस इन इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो जो स्पेशलाइजेशन आप इस कोर्स में करते हो, अगर आप साउ में एडमिशन ले लो, दैट्स इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. सो उनके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इसलिए काफी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं. So, in this series, we'll be discussing the main development economics topics like population theories, like demographic conditions, like things like Lewis model, Harris-Todaro model. Okay, so we'll be covering all these things in the upcoming videos. And today we'll be starting with one of the most famous theories of population given by Malthus. Okay, so Malthus की जो थ्योरी है ऑफ पॉपुलेशन, उसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी फॉर द साउ एग्जाम, हम उसके बारे में क्विकली डिस्कस कर लेंगे. ओके, so the first thing is this theory was discussed in the book An Essay on Principle of Population. Obviously, this book was given by Malthus. His full name is Thomas Robert Malthus, and the book was given in 1798. ओके, नोटिस दैट बहुत ही पुरानी ये बुक है. बहुत पुराने टाइम में ये पॉपुलेशन की थ्योरी दी गई है. एंड अंडरस्टैंड दैट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था वो इससे थोड़ा टाइम पहले ही शुरू हुआ था. ठीक है, तो बेसिकली अभी कुछ खास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुई है. ठीक है ना, अभी देखी गई है कुछ फास्ट टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ. सो दिस थियरी इज बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, बेसिकली अभी दूर दूर तक कोई भी टेक्नोलॉजी को लेकर के एडवांसमेंट नहीं देखी गई है. ओके, सो व्हाट ही बेसिकली प्रपोज्ड इज दैट कि पॉपुलेशन जो है, इट राइजेस एट अ ज्योमेट्रिकल, इज लाइक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. ओके, एंड इट कैन डेवलप एंड इट कैन डबल इन 25 years. ठीक है, if it is unchecked. ओके, अनचेक बेसिकली मींस अगर पॉपुलेशन में सडन फॉल नहीं आता है, लेट्स से ड्यू टू कोई महामारी आ जाती है. ठीक है, देयर इज लेट्स से फेमाइन. ओके, तो या फिर कोई अर्थक्वेक, तो थिंग्स लाइक दैट. अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर नहीं होता है, देन पॉपुलेशन कैन डबल इन 25 years. दैट्स व्हाट इज प्रपोज्ड. ओके, एंड जो लेकिन जो फूड की सप्लाई है, दैट इज इंक्रीजिंग एट अ एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, फूड सप्लाई बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही है. एंड ही प्रपोज दैट कि उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, इम्बैलेंस इन द सेंस दैट फूड सप्लाई वुड वॉन्ट बी एनफ फॉर द अवेलेबल पॉपुलेशन. ओके, सो सो थिंग्स आर समथिंग लाइक दिस कि जो आपकी फूड सप्लाई है, दैट इज इन arithmetic progression. So let's say it started with 1, then it went to 2, then it went to, let's say, 3, 4, 5, 6. मतलब with each year, let's say it is going like this. So it is the arithmetic progression. Okay, कि limited land है आपके पास, and जैसे जैसे लोग भी ज्यादा काम करना शुरू करेंगे on the farming land, then ऐसा कुछ suddenly there is no rise in food supply. Okay, बहुत अगर और रिसोर्सेस आप लगा रहे हो लैंड के ऊपर, देन फूड सप्लाई वुड ग्रो स्लोली. ठीक है, बट पॉपुलेशन जो है, अकॉर्डिंग टू मैल्थस, लेट स्टार्टेड विद 1, देन इट डबल्स. ओके, देन इन द नेक्स्ट ईयर इट डबल्स, देन अगेन इट डबल्स. ओके, so it is growing up like this. That's what he proposed. ठीक है, it's increasing in a geometric फैशन. ठीक है, सो अगर हम इस चीज को ग्राफिकली देखें, if we look at this thing graphically, then let's say on the y-axis we have population, on the x-axis we have food supply. Okay, so अगर फूड सप्लाई 1 पर है एंड एट दैट टाइम पॉपुलेशन इज ऑल्सो एट 1, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, जस्ट टू सी व्हाट मैल्थस इज प्रपोजिंग ग्राफिकली. ठीक है, then when food supply is 2, population is also 2. But when
Food supply is at 3, population is now at 9. Okay, suppose that point is here. When population is at 4, then it is at 16, something like this. So you get this kind of a curve. Okay, this curve is going more towards population. जो population का जो growth rate है, that is much more as compared to food supply. ठीक है? So what Malthus is proposing is that कि ये जो geometric progression है of population growth rate, it is more than arithmetic progression of food supply growth rate. ठीक है? Or food supply growth rate. And this is basically creating the imbalance. There is an imbalance due to overpopulation. All right. So जो हम checks की बात करते हैं, corrective measures जो हो सकते हैं. So according to him, some of the checks that should be taken into consideration are like late marriage होनी चाहिए. Okay. So इस imbalance को रोकने के लिए he proposed a few points like late marriage हो जाए, ठीक है, और मे बी celibacy, things like this. ठीक है, जो we as humans can do, ठीक है, at our side, from our side. And other points that is suggested would stop the population from growing so much would be like famines, floods, wars. Okay, he called these positive. He called these positive checks, and these are preventive checks. So he's talking about two kind of checks जो इस imbalance को रोक सकते हैं so that our existing population does not suffer from food shortage. So one is preventive checks जिसके अंदर late marriage, celibacy जैसी चीजें, and in positive checks जो natural disasters है, okay, famines, flood, wars. All right, and you can quickly now understand कि there is a gap, there is a problem with this theory. And what he was suggesting is कि human population survive नहीं कर पाएगी due to lack of food, but clearly he was wrong, and here we are in 2024 and we are still alive, right? So the obvious criticisms include कि he did not consider technological advancement. So things like green revolution जो इंडिया में हुआ है कि कम resources के साथ भी बहुत ज्यादा food supply increase हुई है. So things like this he couldn't even imagine in 1700s, right? So उस टाइम पर ऐसा कुछ आइडिया था ही नहीं. So one of the criticism is he did not consider technological advancements. Another criticism about this theory is that कि the things like geometric progression होगी population की, arithmetic progression होगी food supply की, okay, and population would double in 25 years. तो इन सब के पीछे कोई भी एविडेंस नहीं, ठीक है, इट्स जस्ट अ जनरल आइडिया, इसके पीछे कोई प्रॉपर मैथ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है. दैट्स व्हाट इज जस्ट took as an example. Okay, there is no solid proof behind these considerations, behind these assumptions. Okay, apart from that, his theory is one-sided in the sense that what he thought was कि population जो grow कर रही है, that's due to high birth rate. But अभी तक जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन में राइज हुआ है, द रीजन इज नॉट राइजिंग बर्थ रेट, रादर द रीजन इज एक्चुअली डिक्लाइन इन डेथ रेट. ठीक है, जब डेथ रेट सी दो चीजों की वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ आ सकता है, या तो बर्थ रेट इंक्रीज हो या फिर डेथ रेट में फॉल हो जाए. सो इट द मेन रीजन इज फॉल इन द डेथ रेट, एंड द सिंपल रीजन इज कि साइंस एडवांसमेंट्स हैव बीन
medical advancements have been there in the last few centuries, okay, due to which uh, population has been growing. Okay, but what he thought was it is rising due to the increasing birth rates. Okay, so its theory is called one-sided. And another thing is he considered population to be a burden. Okay, he had a very pessimistic point of view regarding the younger population in the sense that he thinks of the new generation, what he thinks of the newborn babies and newborn or new younger people is that they are just hungry people who are born with a mouth and a stomach. Okay, but the thing is कि आप humans को सिर्फ ये भूखे प्राणी की जगह you can also consider them as new resource, right? They are not just born with mouth and stomach, they are also born with a pair of hands. Okay, उनके पास हाथ है, उनके पास दिमाग है, so using which they can work hard and help in food supply, right? Okay, so he had a very pessimistic view, and these are the criticisms of his theory. Okay, and clearly he turned out to be wrong. But this theory is one of the first theories. Okay, and that's why it's considered important. So आप कहीं से तो start करते हो, right? So you start with something wrong, and then you keep on updating your information, and then you reach something which is useful and which might be right. Okay, so that's Malthusian theory of population. Okay, so next time we'll be talking about more theories and more models जो आपको exams में काम आएंगे. ठीक है? So if you have come this far, then obviously you are interested and do like this video. ठीक है? It will be motivating for me to create more such stuff. All right? So see you in the next video. Bye bye.